Actually, very good morning to all of you. So we were doing 9.5 exercise. And fourth question, one more part I will teach from question number 4. Fourth question, one more part from fourth question. Simplify m square minus n square m whole square plus 2m cube n square, right? This is to be simplified. इसको हमें simplify करना है. That means using identities, we have to open the bracket and then we have to find the answer. First of all, here we will use identity a minus b whole square. This is a square minus 2a into b plus b square. This is working as a, this is working as b. Plus 2m cube n square, right? Now further it is equal to m square m raised to power 4, 2 2s are 4, minus 2 m square m, like factor, m square multiply m becomes m cube n square as it is, plus n square का square n raised to power 4 m का square plus 2 m cube n square. Further, if the like terms are there, then solve, otherwise leave the answer here only. M raised to 4, no term is like this. This 2m cube n square, this is 2m cube n square, they are the like terms. One is with plus sign, another is with minus sign, will get cancelled. So we are left with m raised to power 4 n raised to 4 m square. Let us start with question number 5th. Show that question number 5th may certain proofs are there. I will teach 1 or 2 parts, rest you will do yourself. Question number 5th, I am doing third part. 5th question, third part is 4 by 3m minus 3 by 4n square plus 2mn is equal to 16 by 9m square plus 9 by 16n square. This is to be proved, right? Now see how we'll proceed. First of all, taking the left hand side. जब भी to prove आता है तो आपने left hand side, right hand side separately लेंगे. So I am taking left hand side. Applying the formula a minus b whole square, you will be having a square minus 2 into a into b plus b square plus 2mn, right? So we'll open these brackets. देखो जरा, 4 का square 16, 3 का square 9, m का square n square. Here if the cuttings are possible, then you do it. 3 3 4 4 get cancelled. We are left with minus 2mn plus 3 3s are 9, 4 4s are 16 n square plus 2mn. Minus 2mn plus 2mn got cancelled. This is 16 by 9m square plus 9 by 16n square. This is what? This is right hand side and hence proved. Some of the questions are like this. एक तो question ऐसा था ना कि हम left hand side को solve करते हैं, हमारे पास right hand side आ जाती है. Some of the questions are like this, in which both the sides need to be solved. Let me take one of the part like this, and I am taking part number 2nd, 5th question, 2nd part. Question 5th, 2nd part. We need to prove 9p minus 5q whole square plus 180pq. This is equal to 9p plus 5q whole square. Okay? So let us take left hand side first. So left hand side is 9p minus 5q whole square plus 180pq. Let us solve it using a minus b whole square. This will be a square minus 2ab
b plus b square, 180 pq as it is, right? So we will be having 9p square, that means 81p square. 2 9s are 18, 5s are 90 pq, 5 5s are 25 q square plus 180 pq. This becomes 81p square. These two are like terms, plus minus minus, 180 pq minus 90 pq will be 90 pq, bigger one is 180 sine plus ka, plus 90 pq plus 25 q square. You see, after solving the left hand side, I am reaching here, but it is not equal to right hand side. ये right hand side के equal नहीं है, इसको 1 बोल दो. यहाँ पे आपको right hand side दोबारा solve करनी पड़ेगी. हाँ जी मनस्वी, what do you want to ask? मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें एक बार फिर समझा दोगे? क्या समझ नहीं आया? पूछो. मेरा नेटवर्क इशू, मैं थोड़ा नेटवर्क इशू था मेरा. स्टेप पूछो, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया? मैम फर्स्ट स्टेप से यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस, ये a है ये b है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे लिख दिया. इसको खोला, 9 9 81 p स्क्वायर माइनस फैक्टर्स, लाइक फैक्टर्स मल्टीप्लाई, 2 9 18 5 90 pq, 5 5 25 q स्क्वायर प्लस 180 pq, माइनस 90 pq प्लस 180 pq will be plus 90 pq प्लस 25 q स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी. अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ ही नहीं रही, इसका मतलब इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड सेपरेटली. हमें राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है. लेट अस सॉल्व राइट हैंड साइड सेपरेटली. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 9p प्लस 5q होल स्क्वायर. यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर. So that will be equal to 81p square, 90pq plus 25q square. This is 2. When I am solving right hand side, left hand side, I am getting the answer to be this. After solving the left hand side, the answer is like this. Both the answers are identical, so you will write from 1 and 2, left hand side is equal to right hand side, hence proved. So now I would like to take the fifth part of the same question. Fifth part. Fifth part is a minus b into a plus b plus b minus c into b plus c plus c minus a into c plus a. This is equal to 0. This we want to prove. हमें इसको equal to 0 prove करना है. Right? चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले, मैं यहीं से लेफ्ट हैंड साइड उठा लेती हूँ, 0 को काट के. आई एम टेकिंग दिस टू बी लेफ्ट हैंड साइड. Left hand side is equal to this. Now in this question, in the left hand side, there are 3 terms. This is the first term, this is the second term, this is the third term. 3 terms are there, and in each term you can see one identity is there, a minus b, a plus b. That means दो नंबर्स का डिफरेंस, सेम दो नंबर्स का प्लस. कौन सा फॉर्मूला होता है अगर दो सेम नंबर का डिफरेंस दो सेम नंबर का प्लस हो? a square minus b square. So here we will apply a square minus b square plus second term, दो सेम नंबर, once they were with the difference, then they were with the sum. Formula b square minus, हाँ यहाँ पे a की जगह b हो गया तो b square minus c square. Yes. And similarly here also two same number, once difference, once addition, so a square minus b square. Now see, plus a square minus a square like terms with the opposite side sign gets cancelled. Minus b square plus b square minus c square plus c square get cancelled. This is 0 and this is right hand side, hence proved. ठीक है, चलिए
So let us, rest of the parts you'll do yourself. Let us start with question number 6. Sixth question we are going to start with. Question number 6 is using identity find the following. Using identities. हाँ जी रिदम. मैम जो आप क्वेश्चंस करवा रहे हो उनमें सिर्फ हमें सिर्फ RHS फाउंड करना है. बच्चे कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते ही राइट हैंड साइड वाला आंसर बन जाता है, फिर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूफ. कभी कभी हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है इंडिविजुअली एंड दे आर गेटिंग इक्वल, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. ओके चलिए. यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग. अगर पेपर में लिखा आता है यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग एंड यू आर फाइंडिंग इट डायरेक्टली, दैट मींस 71 मल्टीप्लाई बाय 71, आंसर इज दिस. योर solution will be considered wrong. अगर आपने इसको लिखा हुआ है पेपर में that use identity to solve it, तो you have to use identity. How to use identity? Let me tell you. First of all, you have to break this 71. कुछ बच्चे कहते हैं 71 को तो बहुत तरह से ब्रेक किया जा सकता है. 70 can be broken like 1 can be broken like 50 plus 21. 71 can be broken like 40 plus 31. But we will try our level best to break 71 in such a way such that एक जीरो वाले नंबर के पास कोई नंबर बैठा हो. आप खुद सोचो 71 के बिल्कुल नियर मोस्ट जीरो वाला नंबर कौन सा है? 70. So I should break it like 70 plus 1 whole square. Breaking is very important. How you are breaking it, that going to affect your solution a lot. So you have broken it like this, 70 plus 1 whole square. This is considered as A and this is considered as B, and identity that we will follow is A plus B whole square. So I'm writing here, this is A square plus 2 into A into B plus B square. So this becomes 4900 plus 140 plus 1. This becomes 4900 plus 141. 5041. 5041 is the answer. Breaking is important, and after breaking, identify that which identity will be used. That is equally important. And then calculations so important hoti hai, right? So now I'm dealing with the second part of this question. In some of the part I will tell you how to break and you will do it further, but in many part I will tell you the calculations as well. अब 99 है, 99 के बिल्कुल नियर मोस्ट नंबर कौन सा है? जीरोस वाला 100. So we can break it like 100 minus 1 whole square. Some of the student they like to break it like this also. It's up to you. 90 plus 9 भी कर सकते हो, 100 minus 1 भी कर सकते हो, पर पीछे जितना छोटा नंबर होगा कैलकुलेशन उतनी आसान होगी. That's why I'm doing it by 100 minus 1. So this is A minus B whole square. This is A square minus 2 into A into B plus B square. Identity साथ में लिखनी है जो भी यूज हो रही है. I'm using A minus B whole square is equal to A square minus 2AB plus B square. In exam it is must to write the identity aside. साथ में identity लिखना equally important है. Now solving it. 10,000 minus 200 plus 1. 10,000 minus 200, 0, 0. 9,800 plus 1. This is answer. First 4 में से first second मैंने करवाया, second and third and fourth you will do yourself. Third fourth आपके homework हैं. I'm going to start with the fifth part. Fifth part. Homework part stick करते जाओ. Fifth part is 5.2 whole square. Now to break the decimal number, little bit difficulty you might face. Otherwise, there is nothing like that. You have done the decimal numbers earlier. So how to write 5.2 square? This is 5 plus 0.2 whole square. चलो इसको solve कर लो. A plus B whole square का formula लगा के A plus B whole square, you will get the answer to be 27.04. Now I am taking it sixth part. Sixth part, let us start with 297 into 303.
अब इसको हमें ब्रेक करना है नंबर, दो नंबर्स है हमारे पास यहाँ पे बड़ी चालाकी से. Now you have to see the same number which is nearby to these two having the maximum zeros. 297 and 303. Which number is nearest to both of them and having the maximum zero? 300. So I would like to write it like 300 minus 3 into 300 plus 3. Now you can identify the identity. Same numbers, once subtracted, once added. This is a minus b, a plus b. क्या होती है a minus b, a plus b? A minus b into a plus b. This is equal to a square minus A square, B square. a square minus b square. So this is a square minus b square. So this will be 9 along with 4 zeros minus 9. Answer. Seventh, eighth, you will do yourself. I am teaching ninth part. Seventh, eighth, you'll do it yourself. I am teaching ninth part. One 1.05 मल्टीप्लाई 9.5. अब देखो फिर से हमें कुछ ऐसा नंबर सोचना है जो कि मैक्सिमम जीरोस को कंटेन करता है और दोनों के नजदीक है. अब देखो मैं 9.5 से मैं सोचती हूँ, इसका भी मुझे इतना पता नहीं चल रहा. मैं 9.5 से 9.5 के नजदीक तो हमें 10 नहीं लगता है ना, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. 10 प्लस 10 माइनस 0.5. आप देखो 10 में से क्या माइनस करो कि 9.5 है. हाँ जी जपू जी, एनी डाउट? मैम बुक में 10.5 है, 1.05 नहीं है. ओके 10.5 सॉरी. Yes. तो फिर हम 10.5 वाले से चलते हैं, ये इजी हो जाएगा. अदरवाइज तो कुछ फर्क नहीं पड़ता दोनों से. दिस इज 10 प्लस 0.5 एंड दिस इज 10 माइनस 0.5. देख लो ध्यान से. 10 में 0.5 प्लस करोगे तो 10.5 आएगा. 10 में से 0.5 माइनस करोगे तो 9.5 आएगा. ये थोड़ी ब्रेकिंग मुश्किल है. मैम हाँ जी मैम मेरी बुक में 1.05 दिया है. आप 10.5 से कर लो इसको. तो this will be a plus b, a minus b. So you will be having a square minus b square. This will be 100 minus 0.25. $99.75. Right? Question number 7. Rest of the parts you'll do yourself. Seventh question is, using the identity a square minus b square is equal to a plus b into a minus b, calculate the following. So first of all, I would like to do the second part. 1.02 whole square minus 9.8 whole square. तो यहाँ पे तो उसने बता दिया यूजिंग दिस आइडेंटिटी. पेपर में जरूरी नहीं है कि लिखा हो, आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए. तो a square minus b square, this is working as a, this is working as b, so this will be a plus b into a minus b. So इसमें 9.8 आप ऐड कर दो. This will be 2, 8, 10.82 and multiply इसमें से 9.8 subtract. 9.8 is bigger rather. 9.8 में से 1.02 subtract करो. This will be 8.78. Multiply these two, you'll get the answer. Using the identity a square minus b square, we are doing this.
using the identity a square minus b square. This is 7th question, second part. Okay, is it okay? Chaliye. So now I would like to do its third part. Third part. 7th question, third part is 153 square minus 147 square. This is A, this is B. A plus B into A minus B. This will be 300 into 6. This is 1800. Only the calculations and identities are there. Rest though very easy. Let us start with question number 8, in which identity, rest of the part are homework of the 7th question, in which this identity is to be used. This identity is to be used. This is 103 into 104. 103 into 104. तो क्या आप क्या इसमें यूज करोगे? आपको इसको x प्लस ए एक्स प्लस बी में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो यू विल राइट हियर 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4. ऐसे कन्वर्ट करना है कि पहला नंबर सेम हो, दूसरा नंबर जो मर्जी आ जाए. To apply this identity to you, to solve it with this identity, you have to make the first number to be the same of the breaking. First number same होना चाहिए breaking का, ठीक है? So identity is x square. That means same number का square. Same number means 100. 100 का square plus different numbers add into the same number plus multiplication of the different number. This becomes 10,000 plus 7 into 100, 700 plus 12. This is 10,712 is the answer. चेक कर लो, पहला नंबर ब्रेकिंग का सेम होना चाहिए अगर आप ये वाली आइडेंटिटी से इसको कर रहे हो. Second part, 5.1 into 5.2. So how to break it? 5 plus 0.1, 5 plus 0.2. First number should be the same. So how to proceed? Same number का square, different number add into same number plus different number का product. This will be 25 plus 0.3 into 5 plus 0.02. ठीक है, so this will be 25 plus 1.5 plus 0.02. This is 26.5 plus 0.02. This will be 56.5 answer. हाँ जी रिदम. मैम अगर आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन आएगा, सपोज कोई भी आइडेंटिटी दे दी, तो हमने आइडेंटिटी लिखनी है अब उसके साथ, आंसर के साथ. जहां पे आपने यूज करी वहां पे तो आप लिखोगे ही, बहुत बार बताया ये तो लिखनी है आइडेंटिटी. ठीक है, so this is like this. Now you do the fifth part.
9.7 into 9.8. 9.7 into 9.8. Fifth part. How you will break it? 9 plus 0.7 into 9 plus 0.8. This will be the way of breaking it. Nine plus 0.7 into 9 plus 0.8. So only 26 students are there. So there are, I think, 15 students who are absent. So you have to send me the 15 absentees name. Right, Somil? करो इसको सॉल्व, जो भी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं एक एक पार्ट सबका सॉल्व कर लो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है हम मंडे शुरू करेंगे, ऐसे लिंक टूट जाएगा, डाटा हैंडलिंग उसकी जो भी है हमारी इंट्रोडक्शन एक्सेट्रा, विल डू इट ऑन मंडे. चलिए, one more part I would like to take. Let us do its third part. हम थर्ड पार्ट हो गया शायद. Third part is 103 multiply 98. So we have to break the number in such a way such that the two first number should be the same of the breaking. So this will be 100 plus 3 into 100. अब देखो यहाँ पे -2 माइनस आ गया यहाँ पे. सो हमें पता है हम माइनस वाली आइडेंटिटी हमें आती नहीं, हम प्लस करके माइनस को पीछे कर देंगे ब्रैकेट में. सो यू विल राइट हियर 100 plus 3 100 plus -2, ताकि आपको पता चल जाए कि ये A है ये B है. प्लस जो है उसके बाद माइनस को आप कवर कर लो. तो दिस विल बी ए सेम नंबर का स्क्वायर डिफरेंट नंबर का ऐड इनटू सेम नंबर प्लस डिफरेंट नंबर का प्रोडक्ट. सेम नंबर का स्क्वायर डिफरेंट नंबर का ऐड इनटू सेम नंबर प्लस डिफरेंट नंबर का प्रोडक्ट. So you will be having 10,000, 3 minus 2 into 100 plus minus minus 6, 10,000, 1 into 100, 100 minus 6. So this will be 10100 minus 6. 10094 is the answer for the same. 10094 answer. Right, so here we are going to finish with this chapter. So we'll continue with the next chapter, data handling, on Monday. So tomorrow is holiday. हम कॉपीज कब तक भेजनी है? By your day, I will put the date of submission of the notebooks in the book in the group. So till then, take care and bye bye.